वाइट से खत्म कर रहे सबका नाम लीजिए, आपका वापस। आप यहाँ पे कब से हो? 6 महीना हो गया मुझे यहाँ पे। और आप यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे मतलब मैं मैनेज करती हूँ सब, जैसे बच्चों का हेल्थ इशू, उनका वेट विजिट और रेस्क्यू भी करना पड़ता है, रेस्क्यू तो हाँ, उनका मेडिसिन, यहाँ का साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह मतलब मुझे सब देखना पड़ता है, राशन और जैसे कि और भी यहाँ पे झोपड़ी का काम चालू है वो भी देखना पड़ता है, जितना भी है पीछे आगे सब साफ सफाई। तो आपने कुछ बोला था कि दिसंबर के लिए आप वो कर रहे हो, वो क्या है? दिसंबर के लिए मीन्स पहले मतलब यहाँ के जो दादा है ना, उन्होंने हमें सोचा तो झोपड़ी दिया था, तो वहाँ पे अभी लोग आ गए रहने के लिए, तो हमारे 2 डॉग है उनको हमने रेस्क्यू किया था। एक पैरालाइज था और एक का पैर सड़ गया था, तो उसका पैर काटना पड़ा, तो उसके बाद वो ना मतलब शॉप पे चला गया, उसको डिस्टेम्पर हुआ और पैरालाइज डॉग को पहले जॉन्डिस हुआ फिर डिस्टेम्पर हुआ, तो वो दो डॉग को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते थे क्योंकि बाकी डॉग को हो गया, तो पीछे झोपड़ी बनाया था पर वो झोपड़ी भी चला गया, तो वो लोग बाहर हो गए, तो हम लोग यहाँ पे पीछे बाजू ना छोटा सा झोपड़ी खड़ा कर रहे थे उनके लिए सबसे अलग, बस सिर्फ वो 2 जन के लिए, तो तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे पेड़ है ना, इनसे थोड़ा साफ सफाई की है वहाँ पे के लिए, तब तक के लिए केस डाल के उनको रखा है, तो देख लेना। और वो पैरालाइज डॉग का पहले वो चलता नहीं था, 3 पैर से ना वो खाता है ना, उनकी मेहनत से और सब लोग की वजह से अभी वो थोड़ा चलने लगा। तो आपके यहाँ पे जो खाना आता है, दवाई आती है, वो सब आप खर्चा कैसे करते हो? कुछ डोनेशन से आती है, मतलब देखिए हम लोग को 2 फूड बैग देती है मेरी मॉम को, जैसे हम लोग की घर वाले भी फीडिंग करते हैं। तो शेल्टर का खर्चा आप कैसे वो करते हो? वही मैंने कहा ना आपको कि डोनेशन आता है और कुछ कभी नहीं होता तो दीदी खुद के पैसे से आधा नहीं आता तो ठीक है। और आपको भी हमेशा से जानवरों से प्यार था? हमेशा से तो नहीं। तो आप कैसे आ गए ये जगह पे आप कैसे पहुंचे? ये जगह पे अदिति दीदी मतलब मैं भी मतलब नॉर्मल फीडर ही हूँ, मतलब जो हम लोग रेस्क्यू करते आसपास के जो एरियाज है, तो वहाँ से हम लोग ने डॉग रेस्क्यू किए, तो रिकवरी होने के बाद उनको रिटर्न एरिया में छोड़े, तो उनका कैसा मन इधर ही लगता है, तो डोंबिवली से भी कुछ डॉग भाग के आए रिटर्न इधर, आसपास के एरिया के जितने डॉग है तो वो डॉग बाहर ही रहते इधर, तो उनका भी सब फीडिंग वीडिंग सब हम लोग करते। आपका नाम बताइए प्लीज। आकाश। 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 आप यहाँ कितने सालों से हो? मेरे को अभी 1.5 मंथ हो गए। 1.5 मंथ। आपको कुत्तों से बहुत प्यार है? हाँ, बचपन में मालूम नहीं था ये थोड़ा, तो बाद में देखा इधर उधर लोगों ने बताया, फिर मैं आने लगा इधर, देखने लगा, अच्छा लगा मेरे को भी इधर, सबकी हेल्थ, बच्चे लोग सब बच्चे हेल्दी है, तो मैं इधर ज्वाइन किया। So like Nisha said here that it's not necessary कि आप पैसे से हेल्प करो, but there are other things that will make you feel better by helping these animals. So like she said, vehicles, medicines or food, these are small things that we can do to help these animals. So I think let's come together and इनकी help करते हैं. Thank you. मैं में से भी पहला काम करता था, मुझे 20 साल हो गया, मेरा मतलब ये हो गया सर्विस हो गया उधर, वहाँ से फिर मैं दूसरे जगह काम कर रही हूँ, तो ये काम कर रही हूँ। तो कितने साल हो गए आपको इनके साथ? उधर मैं 20 साल काम किया और यहाँ मेरे को साथ में। जब एनिमल्स आपको प्यार करते हैं, आपके जब एनिमल्स यानी जब कुत्ते और सब बिल्लियाँ आपको प्यार करती है, तब आपको मन में कैसा फीलिंग कैसा रहता है आपकी? बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि कोई भी बच्चा कोई भी आ जाएगा, यूजर आ जाता है तो तुरंत हम लोग उसको ड्रेसिंग या कुछ भी करते हैं अच्छे से, या कुछ गंदा हो गया तो उसको शैम्पू से नहला देते हैं हम लोग, साफ पोंछ के फिर उस जगह पर। और एनिमल शेल्टर पे काम करना एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है आपकी, जवाबदारी क्या रहती है यहाँ, और कितनी बड़ी है जवाबदारी आपकी? जवाबदारी बड़ी बोलेगा तो मैं सायन में रहता हूँ, सायन से आएगा तो 8:30 बजे यहाँ पे सोता हूँ मैं, इसके बाद में मैं पूरा साफ सफाई वगैरह सब करता हूँ, उसके बाद में खाना पेडिग्री बच्चों का खाना रहता है, बड़े लोग का अलग खाना रहता है डॉग्स का, तो उनका खाना वाटी रख देते हैं,
एक घंटा तो भी हम लोग वाटी रख देते हैं उनको, ताकि उन्हें खाना चाहिए। और कभी कभार कोई एक कुत्ते को बुखार आया और सब दूसरे कुत्ते उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो आप वो चीज़ को आप कैसे खेल रहे हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि वो खेल रहे करते। अगर वो उसको बीमार है और वो उसके साथ खेल रहे तो उसको हम लोग अलग केज में जाके रख देते हैं, फिर उसका आज या कल ऐसा ट्रीटमेंट अगर जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि कुत्ते इतने डेंजरस है, इतने खतरनाक है, काट वाट डालते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? रहता है ऐसा, खतरनाक भी रहता है, तो फिर उसको काबू में करने के लिए जैसे अभी वो काटने सकती है, काटता है तो उसको जाली में बंद करके और जैसे अगर कुछ लोग आए जो लोग डरते हैं, उनको आप कैसे मिलाते हैं? डरता नहीं, वो जाने के बाद फिर अंदर जब चला गया, एक बार ये लोग को समझाता हूँ, अब वो अपना आदमी है, नहीं साथ हो जाते हैं। अभी कैसे आप लोग गए अंदर, क्या कितना वो भोग रहा था, काटने को दौड़ रहा था, सबको साथ में गए थे। जैसे बीमार कुत्ते आते हैं जिनको लग गया होता है, फिर उनके साथ कुछ हुआ होता है, उनको कैसे आप करते हो, कैसे ट्रीट करते हो, क्या होता है उनके साथ? डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग उसका सेवा करते हैं। जैसे खाना हुआ, पानी हुआ, उसका बेड हुआ, उसका हम लोग देते हैं। जैसे दवा भी खिलाने पड़ता है, तो कई दवा खिलाने का है, उसको चिकन में डाल कर हम लोग उसको खिलाते हैं। और जैसे कभी कभार ज्यादा कुत्ते, बिल्लियाँ और भी जानवर जो आते हैं, उनके वजह से शेल्टर भर जाता है, तो जो बहुत बीमार कुत्ते हैं उनको क्या यूथेनाइज किया जाता है, सुला दिया जाता है? नहीं, ऐसा रूल नहीं, ऐसा रूल नहीं, हम उसको सुला नहीं सकते, वो अपनी मौत से मरेगा, लेकिन हम लोग उसको सुला नहीं। अभी किसी को डिस्टेंबर हुआ रहेगा? नहीं, जब अभी तक तो नहीं हुआ। आपके फेवरेट यहाँ जो है उनके एक दो बारे में बता सकते हैं? आपके फेवरेट? आपको सभी कुत्तों से प्यार होगा या कोई गिने चुने हैं जिन्हें से? यार हम समान है, सबके साथ समान करते हैं। सबका नाम पता है आपको? ये इसका नाम क्या है? इसका नाम मोती। मोती। कितने साल का ये, कितने महीनों का है? हाँ, रहेगा। गाड़ियाँ भी, तो गाड़ी के नीचे आ गया था तो उठा के लाया भाई ने, अच्छे भाई ने लाया। नमस्ते, मेरा नाम पूरम टोपरानी है और मैं एक एनिमल फीडर हूँ घाटकोपर से। सो मेरा एनिमल फीडिंग का जर्नी यहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आई वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली विद द डॉग्स, जहाँ पे मुझे हमेशा बताने में आया गया था कि डॉग्स डेंजरस होते हैं, आपको डॉग्स को हाथ नहीं लगाना है, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स को हाथ नहीं लगाना है, उनसे बीमारियाँ फैलती हैं। बट आगे जाके मुझे मेरे एक दोस्त ने जब भी एक डॉग अडॉप्ट किया, वो भी स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट किया, तभी मुझे पता चला कि नहीं, ये स्ट्रीट डॉग्स उतने बुरे नहीं होते जितना हम लोग को बताने में आया है या फिर हम लोगों ने सुना है जिनके बारे में। तो तब से हम लोगों ने आजू बाजू के जो डॉग्स थे उनको खाना खिलाना शुरू किया और हम लोगों ने जाना कि ये डॉग्स की कंडीशन कितनी बुरी होती है। उनको ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, ना ही प्यार मिलता है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई फाउंड दिस एंड हिज अदर सिबलिंग्स in a polythene bag in a garbage bin while I was going to my college lectures. After working for some time into this field, I came to know that हम लोग को ज़रूरी है कि हम कुछ इनिशिएटिव चालू करें जिससे अवेयरनेस स्प्रेड हो और बाकी लोग भी इंस्पायर हो ये चीज़ करने के लिए। तभी हमने हैंड्स फॉर स्ट्रे पॉज इनिशिएटिव चालू किया था। मेरा नाम राकेश गुप्ता है और मैं गोरेगांव ईस्ट बनराई कॉलोनी में रहता हूँ। पहले स्लम एरिया में रहता था, जहाँ पर मेरा प्यार शुरू हुआ इन कैट और डॉग्स के साथ में। शुरुआत तो कैट से हुई थी, जो मतलब फर्स्ट टाइम आई और मैं फिश खा रहा था तो मैंने उसको थोड़ा दिया, तो उसने मुझे तो प्यार की नज़र से देखा, तो वो मेरा कनेक्शन बन गया और वो बढ़ता गया। उसके बाद कैट को देते देते डॉग्स भी आ गए, तो वो डॉग्स भी को मैं देने लगा। तो अब देते देते एक आए, दो आए, फिर मैंने उनको आगे जाके देखा कि वो अपना एरिया पोस्ट मतलब ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ जाके देखा तो उनको दिया, तो उनके साथ और फ्रेंड। तो ऐसा करते 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 अभी राइट नाउ 150 डॉग के आसपास है, वनराई से लेके कामा स्टेट तक, और कई सारी कैट्स है। ठीक है,
तो जिनको मैं फीड भी करता हूँ, ट्रीटमेंट का भी पूरा सुविधा देता हूँ। अगर बारिश आती है तो मैं जितना हो सके शेल्टर भी बांध देता हूँ। ठंडी आती है तो जो रेस्टोरेंट की दुकान में जो गोनी मिलता है, सेक मिलता है, जो आके उनको बिछा देता हूँ और उनको मतलब कि ठंडी से भी वो बचे। और स्टरलाइजेशन के लिए भी लेके मैंने पूरा इनिशिएट लिया है, मतलब जितना हो सके मैक्सिमम स्टरलाइजेशन किया हूँ मैंने। और प्लस जो भी वैक्सीनेशन भी होता है एवरी ईयर, जो एंटी रेबिस का होता है, वो भी मैं पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक करता हूँ। उसमें से कभी कभी डॉग ऐसा तो सब कोऑपरेट करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि उनको डर लगता है और अचानक बाइट कर लेते हैं। पर ठीक है, बाइट कर ले तो कोई बात नहीं, पर मैं कैरी ऑन करते रहता हूँ। फीडिंग तो ऐसा है कि मोर देन 14 ईयर्स हो गया है जो मैंने शुरुआत की थी कैट या डॉग से, और बढ़ते बढ़ते बढ़ता चले गया। पर हुआ क्या कि जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ, पहले तो क्या होता कि लॉकडाउन से पहले खाली ऐड ऑन करना पड़ता था कि चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिल रही, पर जाके सारे कैट डॉग को चेक करना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ बीमार तो नहीं है, अगर ट्रीटमेंट की सुविधा या थोड़ा बहुत कैट फूड या डॉग फूड जो मुझे देना है मैं कर रहा था। पर जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ तो ये हुआ कि मतलब ये लोग तो बेचारे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, ठीक है ना। मतलब जो स्ट्रे डॉग जो होते हैं, रास्ते पे एक भी स्टॉल नहीं, या होटल्स बंद, सारे चीज़ बंद, साइकिल रहते हैं उस पर बॉटल रहते, ब्रूम रहते, मेडिसिन रहते, कई सारे पे जगह पे मैंने बाउल रखा है जहाँ पे मैं क्लीन करके मैं उसको रिफिल करते रहता हूँ। मैं ओल्ड डॉग है या जितने बच्चे हैं या जितने बड़े हैं जिनको दवा की ज़रूरत है तो वो दवा का ट्रीटमेंट करता हूँ, खाने की ज़रूरत है खाने की सुविधा करके आता हूँ। और करते करते ये मेरा जो शुरुआत होता है, और करते करते कभी 1:30, कभी 2, कभी 2:30 बज जाता है। फिर घर जाता हूँ, घर जाके मैं थोड़ा फ्रेश होके नहा के खाना खा के 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करता हूँ। फिर घर से मैं 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे के आसपास निकलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे खाना में गर्म रहता थोड़ा तो उसको ठंडा करके 5:30 बजे के आसपास मैं फीडिंग शुरू करता हूँ। और ऐसा करते करते शाम को मैं 120 डॉग के आसपास है जिनको मैं ये खाना खिलाता हूँ, और करते करते मुझे 10 बज जाता है। उसके बाद जाके ट्रॉली रख के पूरा क्लीन करके उसको अपने जगह पे रख देता हूँ। फिर मॉर्निंग का फिर से रूटीन शुरू, सेकेंड डे के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ। तो आपने जो बोला कि आप सुबह भी फीडिंग करते हो, शाम को भी करते हो, तो ये एरिया के लोग इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं आपको? हाँ, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। मतलब मैं फीडर हूँ यहाँ पे और A to Z इनिशिएट लेता हूँ, लेकिन हाँ मैंने फेस बहुत किया है, बहुत मैं रोया हूँ, क्योंकि लोग कितने बार मारने आते हैं, गाली देने आते हैं, ठीक है। खाना भी कभी कभी लास्ट से मार देते कि अरे क्यों खाना क्यों खिला रहा है, कुत्ते को मर जाने दे, नहीं 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 खिलाना चाहिए, ठीक है ना। पर मुझे हिम्मत हारना नहीं है और मुझे इनको प्यार करना है और करते रहना है। तो ये चीज़ को भी लेके मैं टैकल करता हूँ, चाहे मैं मैम का सपोर्ट लूँ, चाहे मैं पुलिस स्टेशन का सपोर्ट लूँ, चाहे कोई भी एनजीओ का सपोर्ट लूँ, या मैं किसी से भी हेल्प लूँ, तो मैं लोगों को बुलाता हूँ। इवन कि क्या होता है कि मैं पहली बार झगड़ा नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जितना हो सके हाथ पैर जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी बात मान जाइए, क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत है। आज इनके पास क्या, कुछ भी नहीं है। आज हम इंसान के पास सारा चीज़ है, बराबर है कि नहीं। इनके पास क्या है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। आज अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इनके लिए। आज ये 2 चीज़ जो है जो मेरे मन में बैठा है, इसीलिए मैं कैरी ऑन करते रहता हूँ। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत सारे आते हैं, इवन कि कितने बार मेरे तबीयत खराब हो जाते हैं, लेकिन मैं फीडिंग स्टॉप नहीं करता हूँ। मतलब ये कि तबीयत भी खराब है तो चलो नहीं यार करना है यार, मतलब भले है जो भी ये करना है, थोड़ा ऊपर नीचे करना है पर करना है, और मैं करते रहता हूँ। So Yoda is basically a rescue organization. It's a rescue rehab organization. So we keep all kind of animals, like injured animals. We keep abandoned animals. We keep. We get a lot of puppies. We get a lot of majority. We give priority to sick and injured animals. So that's basically Yoda. We provide free OPD, free sterilization, free vaccination. We also provide on-spot treatment. Yoda provides like tons of other things. So yeah, anything related to dogs and cats, we'll provide. The dog that you saw first, her name is Gracie. She is very old and deals with a skin issue that is very, very severe. We help her with pain meds, antibiotics, and whatever we can in her food. So that's her. The other dog that you saw with a nose injury is a maggot injury basically. We call him Fighter. He is one of our permanent dogs again, yes, not fit to be released on the streets as he has an open injury. The other dog that you saw, that is Bumpy. She initially came to us with thousands and thousands of maggots inside her bum. That's why we call her Bumpy. And a very critical case again, one of our shelters. And yeah, that's about it. So we have to go like 8 years back. So when I started, I never thought I'll work in animals and I'll make my career in animals. After completing my engineering, I was working in a tractor factory in a research and development department in Chandigarh. So one fine day I seen a sick and injured animal. He was hit by a car and he was bleeding on the street and nobody was giving a damn about him. So I picked up the dog. I put him in a car and
on the way to the hospital, on the clinic, the dog passed away. So it's just one thought came in my mind, like, nobody thinks about animals, and since my childhood I was being with dogs. So I thought, like, why not, do something for animals. So I just Google about, like, NGOs in Chandigarh, animal NGOs in Chandigarh. So I found an NGO, I contacted them. Uh, they said, yeah, we want volunteers, and I started volunteering with them almost a year, and I started. Then they said, like, you want to work with us? I said yes. I quit my job. When I started volunteering, actually, I quit my job and I started working with animals. Since then, whoever animals die in my arms, I mean, I'm a very emotional person when it comes to dogs and cats. So when whoever animal die in my arms, I just tattoo their name in my arms. So that all the tattoos are of those animals which died in the shelter. So there are around 62 animals. So some of them logo, किसी का नाम पतंग था तो मैंने पतंग का tattoo बना लिया. So all these animals, cause I believe, I very much believe. I mean, I belong to a tribal family in Kerala, so we, whenever an animal dies, we put something on that, on our where we live, or in our farms, or something which, always keep remembering or keep thinking about those animals. हाँ ये एक जानवर था मेरे पास 10 साल पहले, So that's how I just made tattoos of all the animals. There are a lot of tattoos. So these are the ID stamps that we use for dogs whoever needs saline day and night. And we generally put them on catheters. That is very easy to give them drips. Or if butterflies or anything like that is needed. So that's how we give them we started in 1996, actually our work. Then this shelter was built because the BMC had gone to court, and in that year the stray dogs, they got a reprieve, they were allowed to stay alive, and everybody had to start ABC, that's animal birth control. So that year we didn't have this, but the BMC built this in the happy thought that they would get a verdict against the dogs, and the killing would start again. So these two rooms you see, these rows, they built it in 2 weeks. They built this also, and there was a contraption to actually put animals to sleep inside here. So they were all ready, and then in the court we won. So since we were the biggest NGO at that time also, we are 25 years old now. This year, we were just handed this place on a platter. Not quite. We have to pay the lease every month. But the BMC were told no killing at all. The judgment has taken place, and you hand this over for this animal birth control program to start. So slowly we settled in, and after a couple of years we came. It started in 1996, but we had to work outside, in that Godrej Hillside colony. Then in Navy Nagar, we were setting up camps over there. And when we were ready, we came in, and the BMC vacated. Now they are also helping us. They've come around to that, this program works. And the program works very well because it is advocated by the World Health Organization. It's the only way. Why are we doing it? Not because we are kind and we want to stop the birth of puppies and this and that. We are doing it to stop rabies, which is a terrible disease. And Bombay has 0 rabies cases now in hospital, because there are so many people working at this. So we virtually are working for 25 years, and we got this place like just given to us with only 2 of these rooms, rows. There were 10 rooms in total, and this little office place. So slowly you can see all over it's built up, but flat. Or we'll get into trouble with the construction guys in the BMC itself. So we built an OPD. We built a blind ward. We built for the puppies. Now, of course, they got very angry with us for doing all this. But you cannot let little ones and old dogs suffer on the road. There has to be some place. And we had doctors, we had ward boys, we had medicine, we had surgery going on. So everything was ready to take any type of patient. Now, let me tell you the worst type of patient who has to have emergency treatment. This is Mumbai. It's a mega city.
so many accident cases throughout the night, throughout the day. So of course everybody is sharing the work now. There are many more small NGOs who started, in the recent past and about 10 years back. But we just take them in. And we got wonderful surgeons. So we spread out to all this work. Now we have ABC, which is our major work, that is animal birth control. Dogs and cats also, for spay and neuter. It's very, very helpful for the population, to curb the population. That's our aim. You cannot bring it to zero like China is doing with COVID. You cannot. It has to come to 75%. And we did manage this some years back. But this COVID came, and before that some other problems, and the construction boom in Bombay, it leads to a burst of these dogs and cats coming in to give birth. There's so much food, there's so much garbage. Garbage is the main attraction. So the more we generate, the more dogs we have. You can complain as much as you like, but the dogs will not listen. They come for the garbage. They have to stay alive. So we started there, and we've gone to all sorts of patients. Now cats also. Ma'am, what is your journey? I was very fortunate, because at the first meeting, where everybody in the world had complained that this killing is too much. So we had a very wonderful meeting at a place which is not so wonderful, where the killing took place in Mahalakshmi. And there I was sitting next to this wonderful lady. She's the founder of this place. That's the first time I met her. It was so fortunate, it was such a wonderful thing for me to meet her. I was a big fan of hers. So at that time I just asked her, can I join your NGO, because she had started, she was working with camels and saving, like in a small way. So I started on that in 1996, that meeting, at Mahalakshmi Pound. It was called a Pound. Now that meeting was so wonderful for all of us, it was such a happy time. We had visited the Pound earlier, and I can't tell you, it was like hell. No sound. About 200 dogs inside those cages, not one sound. They were in such shock, because throughout the day this killing used to take place. You can't imagine how cruel it is. Okay, after that our meeting, then we took a stroll down the center. There was a little place to hold the dogs and all that, the holding cell. You won't believe these dogs. They were lying on their backs. They were like and smiling at us. It was like a beach in Goa. It was such a difference, They understood that we came to help them. They understood that the killing had stopped. So I started at that wonderful time, It was really so exhilarating for us. We got all these dogs given to us and we were told, operate them. No problem. We started, and we really kept at it till today, And it's been very, very difficult, but so rewarding when we achieve certain goals. So I've always been motivated since I was a kid, and that was a big moment in my life, when the killing stopped. Because I saw, I'm retired now, I've seen the worst of it. You cannot imagine, you're too young. You cannot imagine all these dogs and pups on the road and all being caught, and after that it really was horrible for them. And this particular animal, they proved so long ago, they are absolutely our friends. They want to be with us, and treating them like that. I mean, no animal deserves to be treated cruelly. But from 1996, they got the reprieve. And I've always been enthusiastic about it. My enthusiasm has never flagged. Thank you so much, ma'am. So what's your name? Myself, Dr. Rahul Kamei. I am from Mumbai. I am a veterinary practitioner since 3 years. 3 years. 3 years. What made you choose this career? Love for animals, or you always wanted to become a vet? I always wanted to become a vet. Okay, my elder brother is also a vet. From my native place, we have the cattle at Ratnagiri. Okay, from that only I'm in bond with animals. Okay. So what is your journey? Okay, from native From place. childhood, Okay, I completed my primary education at Ratnagiri, then completed my high school, Chembur High School, then completed my graduation in Khalsa College. Then I
taken the admission in the Bombay Veterinary College, Okay. Parel. That's a big college. Yeah. So what sort of an advice would you like to give to us like youngsters in terms of animal cruelty? Okay. First of all, I will tell you, be kind to the animals. Right. As a veterinarian, my duty is to treat animals. In spite of that, be kind to the animal first. As a good doctor is not enough. As a good person, as a good human being is the first thing. Correct. Okay. Thank you. One more question, yeah. Let's go. So what is the line of treatment for the dogs who are injured and who you all taking? Okay. First, we will go through the physical examination. In physical examination, we check for everything. We check for temperature, we check for dehydration status, we check for the mucous membrane, we check for everything, heart rate, respiration, and then we go for accordingly. If road traffic accident, we check for the spinal reflexes. If there is an injury, we check for that injury, what is deep, it is a deep inside wound or anything type of wounds. We accordingly we classify the wound.